All right, so I hope this screen is visible to all. सबको दिख रही है? Yes, sir. Okay, very good. So let me revise whatever we have done yesterday. कल हमने जो भी किया एक बार उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. We have started with the regression analysis, regression equations. हम लोगों को उस एनालिसिस के लिए फॉर्म करनी थी, एस्टेब्लिश करनी थी. तो उसमें हमने दो मेथड्स के बारे में बात करी थी कि देयर विल बी टू मेथड्स टू फाइंड दीज रिग्रेशन इक्वेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, मीन बेस्ड मेथड एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड. देन हम लोगों ने स्टार्ट किया था मीन बेस्ड मेथड से. सो एज पर द मीन बेस्ड मेथड, two regression equations are like x on y equation where x is dependent on y on x equation where y is dependent on x. So the x on y equation will be x minus x bar is equal to bxy y minus y bar, and y on x equation will be y minus y bar is equal to byx x minus x bar, where bxy will be x minus x bar into y minus y bar का summation divided by summation of y minus y bar square, and byx is equal to summation x minus x bar into y minus y bar divided by summation x minus x bar square. So what we are getting from this formula is that कि हमें अगर mean based method से काम करना है तो हमारे पास x और y है, सेम कैलकुलेशन होगी जो कोरिलेशन में हुई थी, उतने ही कॉलम बनेंगे, बस एक दो कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएंगे. और वो कौन से होंगे मैं बताता हूं. फर्स्ट थिंग यू विल डू, यू विल फाइंड x बार जो कि आपको पता है, y बार आपको पता है कि समेशन ऑफ x अपॉन n, एंड y बार इज समेशन ऑफ y अपॉन n. इन दोनों को फाइंड आउट करने के बाद में वी स्टार्ट मेकिंग द कॉलम. हम कॉलम बनाएंगे. फर्स्ट कॉलम विल बी x माइनस x बार. x की हर वैल्यू में से x बार को माइनस करके वैल्यूज को नोट डाउन करते जाएंगे. देन विल मेक y माइनस y बार सिमिलरली. Then we will multiply this column with this column values with the fourth column. So we'll get x minus x bar into y minus y bar. When we'll find these, इसका जो sum आएगा, इसका जो total आएगा, that will be used over here. यहाँ पे दोनों जगह ये वाला total आ जाएगा. Then we need x minus x bar square का sum, तो we'll do x माइनस एक्स बार स्क्वायर. कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यूज यहाँ आई हैं उनके स्क्वायर लेकर के यहाँ नोट डाउन करते जाना है. सिमिलरली द लास्ट कॉलम विल मेक, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, y माइनस वाई बार स्क्वायर. सो ये दोनों समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर को मैं यहाँ पुट करूंगा byx के लिए, एंड समेशन ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर को मैं यहाँ पुट करूंगा bxy के लिए. ये हमने कल कॉन्सेप्चुअली किया था. क्वेश्चन एक भी प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, वो आज करेंगे. बताइए, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर. यस सुष्मिता, यू आर आस्किंग, तो अब बताओ बेटा. क्लियर हुआ? नो सर, यस सर, 7 कॉलम. यस. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ स्मॉल क्वेश्चन. मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी पेन रेडी रखिए और क्वेश्चन को नोट करते जाइए, and then we'll find the regression equations between x and y. So the x values are 1 3 4 6, 8 9 11 14. Okay, then we'll have y values which are 1 2 4 4 5. Okay, 7 8 9. ठीक है. These are the two values of x and y series, and we need to find the regression equations between x and y, x on y and y on x. So सबसे पहले क्या करेंगे बताइए?
what we'll do? सर 5 के नीचे क्या है? 7 है या 1 है? This is 7 beta. This is 7. Sir, first we are trying to calculate the x bar and y bar. Yes, so x bar will be summation x upon number of observation and y bar is equal to summation of y upon number of observation. So x का sum करेंगे कितना आएगा? 8 6 14 22 31 32 42 46 56 summation of x. करके देखिए. Yes, sir. 56, okay, divided by 8. Yes, sir. Similarly, summation of y, 40. Okay, Nisha is saying yes. So summation of y is 40, I guess. आप लोग cross check जरूर करिएगा. So x bar will be 7 and y bar will be 5. कोई दिक्कत इसमें किसी को? No, sir. All right. So x minus x bar is 7, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो x minus 7 भी लिख सकता हूँ या आप इसको x minus x bar भी लिख लीजिए, whatever you like, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, Yogesh, 7 and 5, x bar and y bar. Similarly, y minus y bar, which is 5, or you can write it as y minus y bar. Both are okay. So just start subtracting. 1 minus 7 will be negative 6. 3 minus 7 negative 4. 4 minus 7 negative 3. 6 minus 7 negative 1. 8 minus 7 will be 1. 9 minus 7 will be 2. 11 minus 7 will be 4. And 14 minus 7 will be positive 7. Similarly, y minus y bar 5. Okay, so negative 4, negative 3, negative 1, negative 1, 0, 2, 3, 4. Is it right? Yes, sir. Okay, Yes, sir. now please listen carefully. कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही कॉमन से मिस्टेक है और बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है, वो ये है, वो क्या करते हैं, इसका सम ले लेते हैं कि सर ने बोला है ना कि समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो वो क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार कॉलम का सम लेते हैं और उसको स्क्वायर करके यहां लिख देते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग. आप इसको प्लीज समझिए. समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर का मीनिंग ये नहीं है कि आप समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करें. बोथ दीज थिंग्स आर डिफरेंट. फर्स्ट में वो कह रहा है कि पहले आप x माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालिए और उसका सम करिए. यहाँ पे इट इज सेइंग दैट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार कॉलम का टोटल करके उसका स्क्वायर करिए. बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट, सो डोंट डू दिस, प्लीज अंडरस्टैंड इट. समझ आया ये चीज, क्या डिफरेंस है दोनों में? यस सर. ठीक है, और आप एक बार x माइनस एक्स बार का सम करके देखिए. What is the sum of x minus x bar? Sir, 0. ओके, सो ये चीज प्लीज क्लियर रखिएगा कि फर्स्ट वी नीड टू फाइंड x माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड देन वी नीड टू टेक द समेशन, right? Similarly, this applies to y minus y bar square also. So just multiply it. So positive 24, positive 12, positive 3, positive 1, 0, 4, 12, 28. So this column will give me the value of summation x minus x bar into y minus y bar. अब क्या करेंगे? What all values we need? Sir, x minus x x bar माइनस is एक्स बार का होल स्क्वायर. Yeah, so x minus x bar square. So ये रही x minus x bar values, स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज तो सबको क्लियर है ही. So negative 6 square will be positive 36, negative 4 square will be 16, negative 3 will be 9,
positive 1, okay, then 1, 4, 16, 49. Please cross verify whether I have missed any value. Then similarly y minus y bar square, so this is what it is. So 16, 9, 1, okay, 1, 0, 4, 9, 16. So summation x minus x bar into y minus y bar is 84 as per Nisha. Please cross check it. Yes, it is 84. It should be 84. Yeah. What is summation x minus x bar square? One 32. Okay, 132. So summation x minus x bar square is 132. Similarly, what is summation y minus y bar square? 56. Okay. So 84, 132, 56. So we have summation x minus x bar into y minus y bar as 84. Okay. Summation x minus x bar square is 132. And summation y minus y bar square is 56. So these three values we have. Now I'm writing the x on y equation. So x on y equation will be, it should be x minus x bar is equal to bxy y minus y bar. Okay, where bxy is equal to summation x minus x bar into y minus y bar divided by summation of y minus y bar square. So we'll find bxy, summation x minus x bar into y minus y bar is 84 divided by summation y minus y bar square is 56. Solve it, guys, and give me the value of bxy. $1.5. Okay, right. So bxy is 1.5 we have. Now since you have bxy, तो अब इस bxy वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा. x बार y बार मेरे पास में है. x बार आई थिंक मेरा 7 था एंड y बार मेरा 5 था. सो x माइनस x बार इज 7 इज इक्वल टू 1.5 y minus 5. So x minus 7 is equal to, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा. 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस माइनस 7.5 हो जाएगा. ये 1.5 y से भी मल्टीप्लाई हो गया एंड 1.5 5 से भी मल्टीप्लाई हो गया. नाउ प्लीज ट्रांसफर दिस 7 टू द राइट हैंड साइड. So we'll have x is equal to 1.5 y minus 7.5 plus 7. So finally, what equation we'll get? X on y equation will be x is equal to 1.5 y and what will it will become? Negative 0.5. This is what x on y equation. Is it clear to everyone? किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत? नो सर. ओके, नाउ एक चीज आप यहाँ देखिए, यहाँ bxy आपका कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 1.5 आ गया इसमें. ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि आप उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाए, तो अप्रोक्सीमेशन की वजह जो भी उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो उसमें आप उसको कर सकते हैं. सपोज आपका आ गया 1/3 आ गया. नाउ व्हेन यू डिवाइड 1/3
you'll get 0.3333 or something. So don't do it in decimal places, decimal form. Use it like this, 1/3. ठीक है, और 1/3 को ही bxy की जगह पुट कर दीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम सॉल्व करेंगे. एक क्वेश्चन ऐसा ले लेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा. अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, वेरी गुड. नहीं हो रहा है तो आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही लेकर के यूज करके इस फॉर्म में आप इक्वेशन लिख सकते हैं. ये बात समझ आ रही है? यस, नो? Yes, sir. ओके, Yes, सो नाउ sir. फटाफट से आप लोग मुझे y on x इक्वेशन हम और निकाल लेते हैं, एंड देन विल डू वन प्रैक्टिस क्वेश्चन आल्सो. सो y on x equation will be y minus y bar is equal to byx x minus x bar. So we need to find byx. So byx will be summation x minus x bar y minus y bar divided by summation x minus x bar square. So byx will be 84 divided by 132. What is the value of byx? 42, 66, 21, 33, 7/11. Okay, is it like 7/11? पॉइंट 63333. ओके, सो ये उसी तरह से आ गया 0.6363. सो आई थिंक इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं. लेट अस सिंप्लीफाई इट, और सिंप्लीफाइड फॉर्म बताइए मुझे क्या आएगा इसका. यस यस, आप लोग डेसिमल में आंसर कर रहे हैं, गुड, बट टेल मी दी फ्रैक्शनल वैल्यू, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शनल वैल्यू. I know कैलकुलेटर से डेसिमल फटाफट आ गया होगा, but let's try it with the fractional 7/11. 7/11. 7/11. Now it will not divide completely. Agree or not? So we'll use this 7/11 instead of going for decimal value. So यहीं पे एक प्रैक्टिस हो गई आपकी, वेरी गुड. So y minus 5 is equal to 7/11 x minus 7. So when we simplify it, this 11 will come over here, multiply by this, and 7 will this. So it will be 11 into y minus 5 is equal to 7 into x minus 7. So 11y minus 55 is equal to 7x minus 49. So 11y is equal to 7x minus 49 plus 55. So 11y is equal to 7x. What it will be? Plus 6. So y Yes, sir. will be 7x upon 11 plus 6 upon 11. Or you can write it like y is equal to 1/11 7x plus 6. Whatever you like, you can do it. Either this or y is equal to 7x upon 11 plus 6 upon 11. This is y on x equation. बताइए, दोनों इक्वेशन जैसे हमने फाइंड आउट करी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. आप लोगों को यहाँ पे दो चीजें माइंड में रखनी है. फर्स्ट थिंग, you should understand the difference between summation of x minus x bar square and square of summation x minus x bar. Both the things are different. हमें x minus x bar square पहले निकालना है, फिर उसका सम लेना है और उसको काम में लेना है. दूसरी चीज, कई बार बहुत रेयरली होता है, स्टूडेंट क्या करता है, इस चीज को समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार को इस तरह से समझ लेता है कि x माइनस एक्स बार कॉलम का सम ले लो और y माइनस वाई बार कॉलम का सम ले लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. नो, you need to multiply x minus x bar column with y minus y bar column. I mean the respective value of x minus x bar and y minus y bar with each other, and then take this sum. So
in summarized way, you should understand that we need to prepare such columns. मैं रटने को नहीं बोल रहा हूँ. Please try to understand the formula, and according to the requirement of the formula, will prepare the different columns in this table. So you need to understand that. Clear है सबको? सर तो ये फॉर्मूला जो लगेगा वो y on x इक्वेशन या फिर x on y इक्वेशन दोनों लगाना होगा मेरे को. Yes, we need to find both the two equations. In Okay, one sir. equation, Okay. x is a dependent variable and y is independent. कल हमने बात करी थी independent Yes, dependent. sir. Yes, sir. Similarly, in Yes, the sir. second equation, y is dependent and x is independent variable. So we need to find the values of, both the equation. We need to find both the equations. Okay, all right. Clear है सबको ये? Yes, sir. चलें आगे? Yes, sir. Yes, sir. All right, very good. So now let us take one more question and then we'll move ahead. All right, so note down the question. It is giving purchases and sales. So purchases are like 57, 58, 59, again 59, then 60, 61, 62, and 64. Please start noting down the question. Then sales is 77, 78, 75, 78, 82, 82, 79, and 81. These are the record of purchases and sales. सर 82 को बात किया. 79 beta. This is 79. And then 81. Right? So obtain the two regression equations between purchases and sales. Start doing it.
Just let me know when you will complete doing it. We'll cross check the answers. Sir, x upon y 11x minus 6y minus 186 है क्या? Okay, let's find out it. एक minute. I think I don't have answers to this. Yeah, tell me what is x on y? 11x minus 6y minus 186 equal to 0. ना ना बेटा, इसको इस फॉर्म में नहीं देना हमें. I told you the exact form. X on in Okay. x on y equation, आपका जो LHS side है, only x will be there. No coefficient, no nothing like plus minus. So just Okay. transfer everything, every rest of the things to the right hand side, and then tell me. Okay. Sir, Okay. sir, x is equals to 0.55 by minus 16.55. 2.5. No, sir, 0.55 by minus 16.55. Okay, I think you have, I mean, taken the decimal places, right? You have Yes, converted that fractional into the decimal. Is it so? yes, sir. Points में आंसर आ रहा ना आपका? Yes, sir. Okay, so that will be there, but I think if it will remain like, I hope bxy क्या है आपका, पहले बताइए. What is the value of bxy? 0.54 something. 0.55. 55, right? So it was like 6 upon 11 bxy. Yes, sir. Yes, sir. तो 6 अपॉन 11 को जब हम आई मीन डेसिमल में लेकर जाएंगे ना, तो वो कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं,
सो मोर एक्यूरेट आंसर के लिए हम क्या करेंगे, इसको 6/11 ही यूज कर लीजिए. I'll tell you. So when you put the value of bxy in that, you might be getting it x minus 60 is equal to 6/11 y minus 79. Am I right? अगर bxy को मैं फ्रैक्शनल में ही ले लेता हूं तो yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Right. So just do a cross multiplication. So 11 into x minus 60 is equal to 6 into y minus 79. So it will be like 11x minus 660 is equal to 6y minus when we multiply 79 by 6. Wait. So 474. 474. Yes, sir. 474. Okay. So now just do it like x. 11x is equal to 6y minus 474 plus 660. So x is equal to, yes. When we subtract, say, I mean 474 from 660, what will get? 186. 186. Yes, sir. Okay. So positive 186. Then we'll do it like x is equal to 6y upon 11 plus 186 upon 11. This is what I'm trying to explain you. If you are not getting the bxy, I mean 6 is not completely divided by 11, right? आप decimal में भी जाएंगे तो you'll be getting the values again and again. So instead of using those approximate values, आप उसको fractional form में ही, fractional form में ही काम में ले लें. That would be better. यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. Otherwise, जिन लोगों ने like Nisha, you whatever answer you have given, approximation basis पे your answer is also okay. No problem in that. Right? So don't take it like कि मेरा आंसर गलत है or something. No, your answer is okay. No problem in that. But when we are not getting the exact value, so instead of going for decimal, I should use fractional value. This is what I am trying to explain you. सबको clear है ये? Okay. Yes, sir. Jagati is saying x is equal to 6y plus 186. Okay, but this 11 is in the denominator and on both the sides. 6y upon 11 plus 186 upon 11 completely भी ठीक है. Bracket लगा दीजिए बस जागृति आपके आंसर में. That would be better. Okay, so किसी को किसी भी तरह की और प्रॉब्लम इसमें? Any other thing जो No, दिक्कत sir. आई किसी को? I want everyone to respond in chat box, please, that they are clear. They have understood both the regression equations, x on y and y on x. Okay, Nisha is saying clear. Deepak, yes sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Clear है. Sushmita is saying clear है. Mitakshi is saying clear है. Okay, Jagrati is saying clear है. What about others? Siddharth is also saying कौन रह गया और? Sushmita is also saying okay. So I hope most of the people are getting it. So अब एक चीज और इस क्वेश्चन में एडिशनल है जो हम कर सकते हैं. वी हैव 5-10 minutes right now. So the question, the additional question in this is that estimate the likely sales when the purchase is equal to equal to 68. You need to estimate the most possible value of sales based on this data when purchase is equal to 68. Means in short, आपको sales की value बतानी है when purchases is equal to 68. Getting my point? अब ये बताइए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए? एनी आइडिया? फिर मैं बताता हूं. यस, जो भी आपको माइंड में लग रहा हो कि सर इसको इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है. एनी सजेशन? No, sir. नो. ओके. सो No, sir. यू हैव बोथ द इक्वेशंस. आपके पास में दोनों इक्वेशंस हैं.
Yes, sir. एक इक्वेशन तो अभी हमने लिखी थी, मैं उनको दोनों को नोट डाउन कर रहा हूं. One equation is like x is equal to 6x upon 11 plus क्या था 186 Yes, sir. अपॉन 11. ठीक है. एंड सेकंड वन इज, सेकंड बताइए. Second, y is equal to, sir, 2x upon 3. ओ सॉरी, यहाँ y आएगा फिर तो. सॉरी, हाँ अब बोलिए. Y is equal to 2x upon 3 2x अपॉन 3 plus 117 upon 3. 117 अपॉन 3. यही है सबके, यही आ रही है. Okay, I take it like this is right answer. Upon 3. Okay, 3 upon 3 is there. So yeah, I hope it is right. So now you have this equation. This will be simplified. This 117 upon 3 can be simplified, na? Y is equal to 2x upon 3, because I think it is divisible by 3. Yes, Deepak? Yes, sir. 39. है ना? 117 can be divided by 3 completely. Yes, sir. 39. Okay, so this is what the y on x. Now please focus on the question. It is asking sales when purchase is equal to 68. So when sales is being asked, आपको सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करनी है सर, x on y या y on x. So that will be decided based on आपने सेल्स को x लिया है या y लिया है, ये बताइए. सर y लिया है सर. एक्स सेल्स को y लिया है. अगर सेल्स को आपने y लिया है और परचेजेस को x लिया है, तो आपको y ऑन x इक्वेशन यूज करनी है. और अगर सेल्स को आपने x लिया है और परचेजेस को आपने y लिया है, तो आपको x ऑन y इक्वेशन यूज करनी है. ये चीज समझ आई क्या? Yes, sir. यानी इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, आई एम टेकिंग इट एज सेल्स इज इक्वल टू x represented by x and purchases represented by y. So in this case, they have asked the value of x based on a given value of y, which is 68. So I'll use x on y equation. On the other hand, if you have taken sales as y and purchases as x, then we'll use y on x equation. ये चीज आपको माइंड में रखते हुए इसका आंसर बता देना है कि सेल्स इफ परचेसेस इज इक्वल टू दिस, सेल्स विल बी दिस. क्लियर है? कुछ नहीं करना. x ऑन y इक्वेशन को जो फॉलो कर रहे हैं उसमें y की जगह आप पुट कर दीजिए 68 एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ x if purchases is 68. This is most probable prediction. This is estimation of the value of sales if purchases is equal to 68 based on the trend, based on the regression, based on the relationship between sales and purchases on the basis of given data. यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? Otherwise we are done for today. No, sir. If no, that is very good. Okay, very good, very good. Right. So आज इसको इतना ही रखते हैं. Wait a second.